Yeah, it's started now. So let's talk about something like cryptography PPT, which we wanted to do from a long time. So let's just learn what are the objectives of the cryptography. To know about the different three security rules, right? To define three security goals or to know about the three security goals. What are three security goals? It's about confidentiality. It's about integrity. It's about another thing which is called, my friend, security. And confidentiality means you want to, keep your information confidential. Like maybe it can be the name of sender, maybe it can be the name of receiver, or maybe it can be the encryption keys also. But confidentiality is very much important whenever it's needed, right? Is a probably the most common aspect of the information system. Yeah, it's most common, and we need to protect our confidential information. It can be anything, but it has to be confidential information. Yeah, our organization as a need to guard against those miscellaneous actions that endanger the confidentiality of the information. So it's just like something which can be understood or cannot be understood, but the thing is confidentiality is important. Security goal contains confidentiality. It contains integrity, that the message is, the person who is changing the any information should be authentic, should be credible, right? We don't want anyone to just random guy to just change all the information. So information needs to be changed continuously, and this change should be done by a person who is authentic or by authorized mechanism, right? Integrity change need to be done only by authorized entity by organized method, by authorized mechanism, right? Yeah. So what's availability? Okay, integrity, and then there is saying security, and he is saying availability. Let's just say, okay, it's availability. Information created and stored by organization needs to be available to authorized entity. Obviously, like if you have some information, it should be available to authorized people, right? And information needs to be constantly changed. It means it accessible to, yeah, accessible to authorized person means they can change it, right? With the help of integrity kind of stuff. And what are attacks? Let's talk about. Okay, so we were talking about objective. We should know about the three different defined three different security goals. Now we did it. It's confidentiality, integrity, availability, and then we should know about the attacks, right? Types of attacks that threaten the security goals. Define the security attacks that threaten the security goals. Okay, to define security services and how they are ahead. Okay, it's not working. Okay, it's working, right? Good. So you know about the security goals, right? You should know about the attacks that threaten the security goal. Then you should know about the services, how they are related to security services, something which is related to security goals. Then you'll learn about different security mechanism to provide security services, security mechanism. Okay, to introduce two techniques, cryptography and serv5 to implement security mechanism. Okay, so everything you will see here is integrated, right? First you know about security goal, then you know about the attacks that can threat your security goal, then you know about something which is related to security goal, that is something, my friend, is security services. Then you will learn about the mechanism to implement the security services, to provide the security service. Then you will introduce two techniques, cryptography and scintigraphy, to implement security mechanism which is implemented to perform security services, which provides, okay, a security mechanism which provides security services, right? Why you need security services? It is something which is related to security goals, right? Yeah. So now you know about security goals, confidentiality. The information should be confidential. What should be confidential must be confidential. The priority, the most important. We protect the information confidential. We must protect the confidential information. That's what it means of our organization. To guard against the miscellaneous action. Information needs to be changed continuously, and the change should be done by a authorized user, by a authorized mechanism. And then availability, the information should be available to all the authorized users so that they can update, they can see, right? And attacks, three security goals of security, authentication and availability can be threatened by security attacks. अब security attacks किस पे हो सकते हैं भाई? Confidentiality पे हो सकता है, integrity पे मार सकते हैं भाई, availability पे मार सकते हैं, और passive versus active attack. ये जो तुमने अटैक पढ़े इसमें से कौन सा पैसिव है, कौन से एक्टिव्स हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी अटैक्स
and taxonomy of attacks, relation, security goals. So ये जो attacks का concept है ये सारे goals से ही related आ रहा है, क्योंकि we want goals, we want security goals, we want confidentiality, we want integrity, we want availability. तो attack इन सब पे हो सकते हैं, या तो confidentiality पे attack हो जाएगा. So the types are something like snooping and traffic analysis. These are attack to the confidentiality. Snooping is something, which can be like someone is prohibiting our confidentiality, someone is conflicting our confidentiality. And then there is something like traffic analysis. Someone who is doing a traffic analysis, he might have impact on your confidentiality. So these are some thing which is related to attacks on confidentiality, which is snooping and traffic analysis. And let's talk about integrity, like who can change the system, who can change the modify the information, right? So what are the threats, what are the attacks on the integrity? It's modification, yeah, random user doing modification, yeah, it's misspreading, let's see, it's masquerading, and it's replaying, it's repetition, right? Repetition is something, not remembering, but I know of something like this. So then I just again talk about this. It's like modification, most important, and masquerading and replaying and repetition. And attack to availability is denial of services. Well, okay, I'm denying you to provide the services. Why? I'm an authentic user. I must get the information which is being available to me. So denial of services is something which is attack to availability. Let's talk about the confidentiality. Snooping refers to unauthorized access or interception of the data Snooping refers to unauthorized access. So your confidential information which you want to be only available to authorized user is now available to some unauthorized person. So this is called snooping. It means unauthorized access or interception of data, right? And traffic analysis refers to obtaining some other type of information by monitoring the online traffic. Someone who is looking to all of us, which is monitoring the online traffic data, so that guy can have impact on our confidentiality. Refers to obtaining some other type of information. It's not the exact information, because traffic may your exact data doesn't go. Some hash values are there, some keywords are there which prevent the original data to travel. So traffic analysis refers to the some other type of information, right? Traffic analysis refers to obtaining some other type of information, like ये बंदा कौन बंदा कहाँ से कहाँ भेज रहा है, किस टाइम पे भेज रहा है, किस प्रकार का डेटा भेज रहा है, not exact data but something metadata you can show by using traffic analysis is just obtaining some other kind of data by monitoring online traffic. That's all it is, my friend. And let's talk about threatening integrity. Okay, modification means the attacker intercepts the message and changes it. So that's what the biggest threat is. Like attacker attacks the message and changes it. And miscarding or spoofing refers to happen when the attacker impersonates somebody else. Okay, spoofing or masquerading and spoofing means whenever attack impersonates somebody else. So he's trying to be like showing himself to be somebody else. So it's kind of it's what we call it. It's phishing or it's identity theft. No, it's a spoofing, masquerading, spoofing, attacker impersonates somebody else. Replaying means the attacker obtains a copy of message sent to user and later tries to replay it. Okay. Means in this replaying, attacker gets the copy of the message, obtains the copy of a message which is sent by user and later tries to replay it. Okay, and this attacker obtains the copy of a message and later he tries to replay it. This is called the replaying. Okay, repetition means that sender of a message might later deny that he sent him. Okay. It's like threatening to integrity. Integrity means information being available to all the authorized user and can change by all the authorized mechanism. Okay, so repetition means a sender who sent the data is now laterly denying that he sent the message, and the receiver might later deny that he received the message. Okay, so what is a repetition? Okay, it's working. Repetition means a sender of data who sent the message later denying that he sent the message, or the receiver who got the message later denying that he got the message.
So this kind of integrity attack on integrity is like you can't trust such kind of this is not an authorized user. So maybe you can say that this is an attack to integrity. Attacks of threatening availability is just denial of service. I'm not gonna provide you. Okay, it's a very common attack. It may be slow down or totally interrupt the service or system. It may okay. So denial of service is what it does. It just slows down the system so that the user is not able to see, or it just totally interrupt the service of the system. Okay. Right. So characterization of passing and attacks, whatever we have just seen so far. Can you just tell me again? So it's just snooping, which is let's talk about attacks on confidentiality. It's snooping and it's traffic analysis. And let's talk about on integrity. It's something like modification, masquerading, or spoofing, or something like impersonating, or it's replaying or repetition or denial of services. So one thing I know that spoofing is snooping is a passive attack, right? Okay, and snooping and traffic analysis, which are actually attacks on your confidentiality. These are passive attacks. These are not active attacks. Why it is so? Because you are threatening confidentiality. No, confidentiality means your information being accessed by somebody else from out of the somebody out of the organization. So these are passive attacks. Like these are not happening on the go, and active attacks, I think, which are happening on the while message is being propagated from sender to receiver, right? Passive attack. So maybe like these don't need maybe we can see what is passive attacks. Okay, so passive attack is saying the attack system monitored or scanned by open ports or vulnerabilities. Passive attack on crypto system is one cryptanalyst cannot interact with any of the parties involved attempting to break the system based on observed data. ठीक है, so जो cryptanalyst है, like the person who is trying to break the into system is not involved any with solely based on the observation of the data, right? With any of the parties involved. Okay, cannot interact with any of the parties, like he cannot interact with either sender or receiver, which was the case when knowing known plain text or chosen plain text or chosen ciphertext. In that cases, the cryptanalyst was actually interacting with either a sender, either a receiver. No, actually, known plain text was also not, like chosen plain text or chosen ciphertext. In that case, like cryptanalyst was interacting with the parties involved, but cannot interact with okay. So passive attack, let me just again see what you mean by passive attack. It's a network attack in which system is monitored or sometimes scanned open ports and vulnerability, and the purpose of passive is to gain information about the system target, do not involve any direct action on the target, right? So it's not any direct so you can just say passive attack is like not directly interacting with either of the parties, right? Like sender or receiver, right? So that's all about it. And yeah, modification, misguiding, replaying, repetition is an active attack, and it's threatening your integrity. As you can say, like modification is maybe interacting with a sender, or repetition can be interacting with any of the sender or receiver. Replaying passive attacks should not affect system resources. Yeah, passive attack is means like just make use of the information which is traveling, but does not make any change on that information. But these modification, misguiding, replaying, or repetition is about dealing with that information, having that information. In passive attack, maybe like in spoofing and traffic analysis, you don't want the information, right?
but you just want the confidential information which is related metadata of the information. And modification, you want the actual information, you are changing the actual information instead. And in miscarding and spoofing, it refers to what? Impersonates the other. Okay. So जिसको तुम भेज रहे हो वो actually genuine बंदा नहीं है, he is just impersonating to be a genuine बंदा. So it's kind of a masquerading. And replaying means getting a attacker tries copy of a message sent by user, obtains the and later tries to replay it. Okay. मतलब रिप्लेइंग में भी वो क्लाइंट साइड से मतलब सर्वर रिसीवर साइड से कनेक्टेड है बंदा, ठीक है, क्रिप्टो एनालिस्ट. एंड डिनाइल ऑफ सर्विसेज एन एक्टिव अटैक एंड इट्स अवेलेबिलिटी, अटैकिंग अवेलेबिलिटी. और डिनाइल ऑफ सर्विसेज आई कैन से लाइक एक बार फिर से देखें अगर डेफिनेशन, इन विच द क्रिप्टो एनालिस्ट कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है. Passive attack is something where crypto analyst cannot interact with any of the parties involved, either sender or receiver. और बाकी सब में मॉडिफिकेशन में आई थिंक वो सेंडर के साथ है, और मिसकार्डिंग में आई थिंक वो रिसीवर को इम्पर्सनेट कर रहा है क्या कर रहा है, यस इम्पर्सनेट कर रहा है 100% श्योर. एंड देन उसके बाद रीप्लेइंग में वो रिसीवर की साइड है, उठा रहा है रिसीवर से डेटा. रिपीटेशन में वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है, इधर रिसीवर इधर सेंडर. डिनाइल ऑफ सर्विसेज में ऑब्वियसली वो रिसीवर की साइड है. एंड रिसीव्स सर्विसेज एंड मैकेनिज्म, दीज आर समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी गोल्स. लेट्स सी. ITU3 provides some security services and some mechanism to implement those services. Security services again are closely related because mechanism or the combination of mechanism are used to provide a service. ठीक है, टॉपिक डिस्कस सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी अगेन रिलेशन. Security service, what do you want? I want confidentiality. What do you want? Integrity. I want authentication. I want non-repetition. I want access control. Again, what do you want? I want confidentiality. I want integrity. I want authentication. I want non-repetition. I want access control. So let's say data integrity means anti-change and anti-replay. Integrity means no one can change, no one can replay, and authentication means peer entity, data origin, non-reputation. Reputation was referring to person after receiving information saying that I did not receive, or similarly with sender. ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑरिजिन होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है, ताकि सेंडर को हम वी कैन से लाइक व्हाई आर यू डिनाइंग, बिकॉज वी नो दैट दिस इज अ प्रूफ दैट यू आर द सेंडर, यू आर द ओरिजिन, और दिस इज द प्रूफ दैट यू रिसीव द मैसेज. ओके. पीयर एंटिटी, ऑथेंटिकेशन, डेटा ओरिजिन, एंड या ऑथेंटिकेशन मतलब ये डील कर रहा है हमारे मिसकार्डिंग को या फिर स्पूफिंग को, जिसमें वो बंदा इम्पर्सनेट करता है, ठीक है. सिक्योरिटी मैकेनिज्म कैन इनसाइफरमेंट, डेटा इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, एक्सचेंज, और डिजिटल सिग्नेचर है मैकेनिज्म, ठीक है. ट्रैफिक पैडिंग, राउटिंग कंट्रोल, नोटराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, रिलेशन. ये क्वेश्चन पेपर भी आया, पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि डिजिटल सिग्नेचर इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है. रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी सर्विसेज, relation between security service and mechanism, data confidentiality, data integrity, and settlement routing, data signature, data integrity. इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर से. ऑथेंटिकेशन कैसे मेंटेन करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर से. नॉन रिपीटिशन कैसे मेंटेन करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर से. एक्सेस कंट्रोल से, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म. Needs two type of technique, या तो cryptography या cryptography is a word of means secret writing. However, the term used to refer to science and art of transmission message, make them secure and immune to attacks. Cryptography origin means covert writing, in contrast to the means right. Covering data with text.
सो दैट वाज अबाउट इट। इसमें जो आपका क्रिप्टोग्राफी और सिनेटोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी मीन्स चेंजिंग सीक्रेट राइटिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स। और उसमें सिनेटोग्राफी इज जस्ट कवरिंग द राइटिंग, कवर्ड राइटिंग, ठीक है। इसमें जस्ट हम कवर कर रहे हैं यार, मतलब कोई अलग ही मैकेनिज्म बना दिया हमने। और फ्रेंड कॉलर डॉक्टर के लिए एक डिक्शनरी यूज़ कर ली, कवरिंग डेटा अंडर द कलर इमेज डेटा विद टेक्स्ट, ऐसा कुछ है। ओके, पर मेन पॉइंट क्या थे यहाँ के? सिक्योरिटी गोल्स के बारे में समझना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में समझना, जो उन गोल्स के रिलेटेड थ्रेट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या थ्रेट कर रहा है? स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस, एंड दीज आर पैसिव अटैक्स। स्नूपिंग होता है कि डेटा उठा लेना, आई थिंक unauthorized access or interception of data. Snooping means unauthorized access of data. भाई unauthorized access sender और उससे related नहीं है यार. Unauthorized refers to unauthorized access or to or interception. ठीक है, unauthorized access of data. You can say spoofing, snooping is unauthorized access of data. Spoofing अलग है, वो तो identity theft है. Snooping is unauthorized access of data. Traffic analysis means analyzing, monitoring online traffic, obtaining some other information by monitoring the traffic. ठीक है, refers to obtaining some information by monitoring the traffic. And ये तो हो गई हमारी confidentiality, integrity है. पहले तो modification है कि you means attacker interrupts the data, intercepts the message and changes it. मीन्स अटैकर जस्ट चेंजेस द मैसेज, ठीक है। और दूसरा हो गया मॉडिफिकेशन के बाद तुम्हारा मैस्कुरेडिंग, एंड उसमें होता है स्पूफिंग, विच इज मीन्स लाइक इम्पर्सनेटिंग समवन एल्स, या इट्स इम्पर्सनेटिंग समवन एल्स मीन्स आइडेंटिटी थेफ्ट। एंड रिप्लेइंग हो गया कि रिप्लेइंग अटैकर गेट्स द कॉपी ऑफ अ मैसेज एंड रिप्लेस इट आफ्टर and later tries to replay it, gets a copy of a message and later उसने ट्राई करा replay करने का, तो ये हो गया। और दूसरा अब replaying के बाद हमारे पास कौन सा बचता है? which is reputation, which means कि now एक user ने send कर दिया data, now he's denying that I did not send it, and a receiver after receiving the data denying that he did not receive। तो ये पंगे हो जाते हैं attacks में, threats to the security goals, and passive थे हमारे snooping और traffic analysis, that was confidentiality का अटैक। एंड बाकी सारे हमारे एक्टिव हैं, सारे अटैक लाइक मॉडिफिकेशन, मस्कैडिंग एंड स्पूफिंग एंड रिप्लेइंग एंड रिप्यूटेशन, ये हो गए। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज आल्सो एन अटैक। इसमें क्या होता है कि ये सिस्टम स्लो डाउन कर देता है या फिर इंटरप्ट कर देता है। वेरी कॉमन अटैक, इट में स्लो डाउन और इंटरप्ट द कंप्लीट सिस्टम। और ये है अटैक टू अवेलेबिलिटी, और ये भी एक्टिव इन नेचर है, ठीक है। तो बस यही है सारे अटैक एक्टिव इन नेचर। नाउ सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें, सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, उनके मैकेनिज्म होते हैं और उनमें एल्गोरिथम होती हैं। टेक्निक्स होती हैं, सॉरी, पहले तो सिक्योरिटी सर्विसेज, फिर होती है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, देन टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो सिक्योरिटी सर्विसेज हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए डेटा इंटीग्रिटी, हमें चाहिए डेटा ऑथेंटिकेशन, हमें चाहिए ऑथेंटिकेशन, हमें सबसे पहले हमें चाहिए डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। सिक्योरिटी सर्विसेज, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूटेशन एंड access control. Again, it's data confidentiality, data should be confidential, data integrity, it should be integrated, and authentication, integrity में दो चीज़ें आती हैं data integrity में कि ये कौन चेंज कर पा रहा है। सो इट्स एंटी चेंज एंड एंटी रीप्ले, ठीक है। इंटीग्रिटी में जैसे हमने पढ़ा था, वहाँ पे दो हमारे थ्रेड्स थे, सबसे मेजर वाले थ्रेड थे मॉडिफिकेशन, और दूसरा था इम्पर्सनेटिंग समबडी एल्स, ऑल्सो एक था कि रिप्लेइंग, कि वो रिप्ले करके देख रहा डेटा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेटा इंटीग्रिटी में एंटी चेंज होना चाहिए, एंटी रिप्ले होना चाहिए, में होना चाहिए पीयर
एंटिटी कि भाई मैं अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ तो मेरा पीयर भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। सो ऐसे कनेक्शंस के थ्रू हम पीयर एंटिटी से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा, जिसको नहीं देना डेटा ओरिजिन, भाई जहाँ से ओरिजिन हो रहा है उस वो तो होगा ही पक्का ऑथराइज्ड यूज़र, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमने बात करी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की, देन हमने बात करी डेटा इंटीग्रिटी की, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एंटी चेंज और एंटी रिप्ले। देन हमने बात करी ऑथेंटिकेशन की, इसमें 2, प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड प्रूफ ऑफ रिसीव, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है, प्रूफ ऑफ ओरिजिन, प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड देन एक्सेस कंट्रोल। बस यही है। अगेन इट्स लाइक डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं एंटी चेंज, एंटी रिप्ले, ऑथेंटिकेशन के अंदर आते हैं पीयर 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 एंटिटी एंड डेटा ओरिजिन, एंड देन आता है हमारा नॉन रिपीटिशन के अंदर आता है हमारा डेटा प्रूफ ऑफ ओरिजिन, प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड देन एक्सेस कंट्रोल्स। ओके, तो आने के लिए मैकेनिज्म कौन कौन से हैं भाई? देखो मैकेनिज्म है हमारे पास, एक है इनरिचमेंट है, इन्फोर्समेंट क्या है ये, इनसाइफरमेंट है, डेटा इंटीग्रिटी है, डिजिटल सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे ख्याल से। डेटा इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग, रिमोट राउटिंग, राउटिंग कंट्रोल, नॉटराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। ओके, अगेन इनसाइफरमेंट, डेटा इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग, राउटिंग कंट्रोल, नॉटराइजेशन। तो इनसाइफरमेंट किसको हेल्प करता है? ऑब्वियसली साइफर है तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को हेल्प करेगा। डेटा इंटीग्रिटी किसको हेल्प करता है? डेटा इंटीग्रिटी को हेल्प करेगा, ठीक है। इनसाइफरमेंट के अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी को डिजिटल राउटिंग कंट्रोल, भाई राउटिंग कंट्रोल बहुत हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भाई ट्रैफिक एनालिसिस है, ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें आ गई तो राउटिंग से रिलेटेड आ गई, पर ट्रैफिक पैडिंग क्यों नहीं आया? वो कहीं भी नहीं आया। नॉटराइजेशन बस एक ही में आ रहा है, नॉन रिपीटेशन में, नाम से समझ सकते हैं एन पर, ऐसी बात नहीं है। पर देखो पहली बात हमने करी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो सबसे पहला इनसाइफरमेंट उधर आ गया, राउटिंग कंट्रोल उधर आ गया। अब बात करी इंटीग्रिटी की, तो डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे आ गया, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आ गया, ऑथेंटिकेशन भी आ गया। नहीं, इनसाइफरमेंट तो हर जगह ही चलता है भाई, चलता है, मतलब 3 में तो चल रहा है, शुरू के 3 में, नेक्स्ट 3 में डिजिटल सिग्नेचर चल रहा है भाई, चल रहा है। सो इनसाइफरमेंट, अब तुम्हारे डेटा इंटीग्रिटी में भी इनसाइफरमेंट आ गया, डेटा इंटीग्रिटी आएगी, डिजिटल सिग्नेचर आएगा। देन यू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेशन में तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर टॉप पे आता है, राइट, एंड देन डिजिटल इनसाइफरमेंट भी आ सकता है, इनसाइफरमेंट भी आ जाता है, एंड ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज भी आता है। ऑथेंटिकेशन की बात हो रही तो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज इसी में तो आएगा। अब सारे कवर होगा, ट्रैफिक पैडिंग अभी तक नहीं आया, रूटिंग। अब जैसे नॉन रिपीटेशन में आपका डिजिटल सिग्नेचर आएगा, ये आएगा, डेटा इंटीग्रिटी आएगा, नॉन नॉटराइजेशन आएगा। डिजिटल डेटा इंटीग्रिटी क्यों आ रहा है भाई, यहाँ दोस्त कर बंद कर रहे हैं, और इसमें नहीं आया ऑथेंटिकेशन में, नहीं, एक्सेस कंट्रोल में एक्सेस कंट्रोल आएगा। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को कौन कौन बचा रहे हैं। इनसाइफरमेंट बचा रहा है, एंड ट्रैफिक रूटिंग कंट्रोल बचा रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी को, राइट। अब बात करें अगर डेटा इंटीग्रिटी को कौन बचा रहा है? डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिग्नेचर, इनसाइफरमेंट ऑब्वियसली, एंड इनसाइफरमेंट काम कर रहा है हमारा, एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन में हेल्प नहीं कर रही। देन टॉक अबाउट नॉन रिपीटेशन, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रिटी हेल्प कर रही है, नहीं देखो आई नो दैट इसमें डेटा सिग्नेचर हेल्प कर रहे हैं, इसमें नॉटराइज डेटा इंटीग्रिटी हेल्प कर रही है भाई, कर रही है, एंड देन यहाँ पे नॉटराइजेशन भी हेल्प कर रहा है नॉन रिपीटेशन में, जस्ट या, एंड देन वी शुड टॉक अबाउट एक्सेस कंट्रोल, बस एक्सेस कंट्रोल ही है भाई वो तो। So that was about it. Again, if you want, like again, so confidentiality को कौन बता है? Encipherment, and then है routing control. Then if I talk about data in confidentiality हो गया, integrity को कौन बता है? Integrity, signature, data signature, and encipherment obviously, and authentication को कौन सा है? Authentication exchanges, data signature, digital signature, encipherment obviously, and then if you talk about the fourth one which is non-repudiation, उसको बचाने के लिए है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है, डेटा इंटीग्रिटी है, अगेन ऑथेंटिकेशन में नहीं था, एंड देन यहाँ पे नॉटराइजेशन है, एंड एक्सेस कंट्रोल, जैसे एक्सेस कंट्रोल। एंड टेक्निक्स कौन सी है यहाँ पे? क्रिप्टोग्राफी है, सिनेटोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी का तो मतलब पता है, सिनेटोग्राफी का मतलब पता है, बस यही है। कवर्ड सीक्रेट राइटिंग, कवर्ड राइटिंग, जस्ट दिस वाज अबाउट इट द मेन पीपीटी। इसमें मेन तो मेरे को लगा पैसिव अटैक का क्वेश्चन आया था, तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है एक्टिव और पैसिव अटैक वाले। बस जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी के दोनों अटैक हैं, स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस, ये दोनों पैसिव हैं। बाकी सारे इंटीग्रिटी के और अवेलेबिलिटी के जो 5-6 अटैक है वो सारे हमारे एक्टिव हैं, ठीक है। एंड कौन कौन से हैं? वो है तुम्हारा मॉडिफिकेशन, वो है तुम्हारा रिपीटेशन, वो है तुम्हारा रीप्लेइंग, वो है तुम्हारा मस्टार्डिंग, दैट्स स्पूफिंग आल्सो, एंड वो है तुम्हारा डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये सारे एक्टिव हैं।
एंड देन दूसरा क्वेश्चन आया था कि तुम्हारा डेटा डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रिवेंट डेटा इंटीग्रिटी कर पाता है वो, डिजिटल सिग्नेचर इज अ प्रूफ भी है, एज अ प्रूफ भी यूज़ होता है, राइट, क्योंकि वो नॉन रिपीटेशन में यूज़ हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर सबसे टॉप पे, कि प्रूफ ऑफ ओरिजिन, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, डिजिटल सिग्नेचर। सो डिजिटल सिग्नेचर और क्या करता है, वो तुम्हारे डेटा इंटीग्रिटी भी करता है, वो और क्या करता है, वो तुम्हारा वो नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं कर पाता, उसके लिए अलग है इनसाइफरमेंट और रूटिंग है, पर डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तुम्हारा 3 चीज़ें यूज़ होता है, इंटीग्रिटी में, ऑथेंटिकेशन में और नॉन रिपीटेशन में। बस दूसरा क्वेश्चन डिजिटल सिग्नेचर से आया था। सो दैट वाज अबाउट इट। ओके बाय।